So understand this. I will update the inventory. I will create a new accounting entry debiting the customer account and crediting the sales account, because I'm supposed to take money from him in future. Maybe 30 days ka credit hai, after 30 days I must get a report that these are the people to whom you have sold. So there is another table which needs to be updated, and that will be an accounting table, some kind of accounting table. Then there is a table called order table, in which there are records specifying the orders against which I have created this particular invoice. So I need to mention. So I need to close that order, because against that order I have already invoiced. So why will I invoice it again? So wo ho gaya. Then I need to have this new invoicing entry created again in some table in the database. So how many tables are updated? 4 tables. अब आप सोच के देखो. All with me, right, friends? All with me? Yeah. Yes. अभी सोच के देखो. While from one application, I've got all the data from the user interface that this is the data that needs to be updated. Now just imagine, inventory update हो गया और कुछ error आ गया. Inventory तो update हो गया, मतलब मेरे inventory में से माल निकल गया, लेकिन accounting entry तो बना नहीं. ऑर्डर क्लोज हो गया लेकिन अकाउंटिंग एंट्री नहीं बना. अकाउंटिंग एंट्री बन गया या लेकिन ये अपडेट नहीं हुआ, अपना इन्वेंटरी अपडेट नहीं हुआ. तो ये इनकंसिस्टेंसी हो जाएगा ना. Come on, yes or no? There will be inconsistency out. Yes. Right? So any RDBMS will provide you with this feature. What? Either everything will be committed or everything will be rolled back. Yes, transactions. या तो सब के सब होगा, हर चारों टेबल में जो आपने किया है वो सब कमिट हो जाएगा परफेक्ट, या फिर सब के सब रोल बैक हो जाएगा. This is the most critical reason why databases exist. मैंने जब अपना करियर स्टार्ट किया था तो FoxPro से स्टार्ट किया था. FoxPro, पता नहीं कितने लोगों ने सुना भी है कि नहीं. FoxPro 2.6 वर्जन था जब. FoxPro, it was not an RDBMS, it was DBMS, and there was no concept of transactions. वहां पे होता था ऐसा, और हम लोग उसको बोलते थे ऑर्फन रिकॉर्ड्स. ऑर्फन मतलब एक टेबल में अपडेट हो गया, दूसरे टेबल में नहीं अपडेट हो गया. तो हम लोग क्या करते थे फिर एक रिपोर्ट जनरेट करते थे. एक रिपोर्ट था वो बनाया था, वो उसका प्रोग्राम लिखते थे टू गेट ऑल सच एनॉमलीज इन माय एप्लीकेशन. यू नो, जहां डेटा में एनॉमलीज है, मतलब प्रॉब्लम है. ओके, जहां प्रॉब्लम है, anomalies, right? Anomalistic. See this of the nature of an anomalous. तो उसका मतलब क्या? The production is systematically something that deviates from what is standard, normal or expected. That's what an anomaly is. So हम लोग वो सब तो इतना, लेकिन फिर RDBMS आ गया, Oracle, Sybase, Infamous, Ingress, वो that provides you with many features, out of which one is this transaction management and stuff. Now ये तो RDBMS है, लेकिन ये क्या है? ये तो फाइल सिस्टम है. अभी अगर मुझे लिखना है ये फाइल सिस्टम में, तो मुझे यही सब फीचर अगर चाहिए तो कहां से आएगा? So this is what the framework called Delta gives you, right? Delta.io. Build lake houses with Delta Lake. I'll come to the lake house and the Delta Lake a bit later. But then it's an open source storage framework that enables building a lake architecture with compute engines like Spark, blah, 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 blah. राइट और उसका अभी देखो मैं आपको डॉक्स में ले जाऊंगा. तो यहाँ पे इंट्रोडक्शन में देखो, यहाँ पे ओपन सोर्स प्रोजेक्ट है, कोई भी यूज कर सकता है. ओके, ऑन टॉप ऑफ दिस Delta Lake provides ACID transactions, scalable metadata handling, and unified streaming and batch processing on top of existing data lakes such as S3, ADLs, GCS, ये Google का, and HDFS, which is Hadoop file system. बहुत पावरफुल है, बहुत पावरफुल है. And data warehouse is the term that almost every one of you all might have heard. Data warehouse is, it's a database where you are warehousing your data. मतलब आपका बरसों बरस का भी डेटा वहां पर है, so that you can do analytics, so that you can get business intelligence, so that you can drill down and check कि अगर आज लास्ट ईयर क्या सेल था इसी महीने में, तो ये साल उससे कम है कि ज्यादा है. दिस इज द काइंड ऑफ बिजनेस इंटेलिजेंस दैट यू कैन गेट फ्रॉम द डेटा. सो डेटा वेयरहाउसिंग. अब डेटा वेयरहाउसिंग जो है ना, ये डेटा वेयरहाउसिंग के जो डेटाबेसेस है उसके अंदर रेडशिफ्ट हो गया और बहुत सारी डेटाबेसेस है जो सपोर्ट करते हैं. बिग क्वेरी इज फ्रॉम गूगल. बिग क्वेरी is from Google. That is a data warehousing solution from Google. Then BigQuery is the name of the database.
एंड देन यहाँ पे रेडशिफ्ट है, वैसे ओरेकल के पास ओरेकल का डेटा वेयर हाउस है, एंड सो ऑन। बट अभी दुनिया मूव कर रही है ये डेटा वेयर हाउस बेस्ड डेटाबेसेस से, फॉर वेरियस डिफरेंट रीजंस, कॉस्ट, दिस दैट, दे आर मूविंग टुवर्ड्स सिस्टम लाइक दिस, एंड दे आर नाउ कॉलिंग इट डेटा लेक्स, नॉट डेटा वेयर हाउस. What are they calling it? Data lake. Lake समझते ना, तालाब, और डेटा है वहां पे, they calling it data lake. So S3 is one of the storage or a file system mechanism where you can create data lake. अब जब data lake बनता है, usually this is the term that is used. कोई thumb rule नहीं है, कोई ये technical चीज नहीं है, but logically this is how the data is segregated. It is segregated between 3 layers. It's called bronze, silver and gold. जब data lake बनता, data lake, bronze, silver, gold. ब्रॉन्ज के अंदर डेटा अनस्ट्रक्चर्ड डेटा आता है, हजारों जगह से डेटा आएगा, ट्विटर से डेटा आ रहा है, फेसबुक से डेटा आ रहा है, ओटीएम से डेटा आ रहा है, एनालिटिक्स का डेटा आ रहा है, ये डेटा वो डेटा, वेसल शेड्यूल्स आ रहा है, सब आ रहा है, वो सब आके डंप होगा किधर? ब्रॉन्ज लेयर. वो वैलिडेटेड डेटा नहीं है, क्लेंस्ड डेटा नहीं है, उसका क्लीनिंग नहीं हुआ है, उसका सैनिटाइजेशन नहीं हुआ है, सब वहां पर ब्रॉन्ज में आ गया, इसीलिए इसको बोलते हैं ब्रॉन्ज फर्स्ट लेवल. फिर आपके ट्रांसफॉर्मेशंस चलते हैं, which will pick up the data from your validate the data, transform the data, और एक structured way में डालेगा सिल्वर में. ये आपके पास सिल्वर का बकेट होगा, तो एक बकेट होगा ब्रॉन्ज का जिसके अंदर डेटा आएगा, फिर ट्रांसफॉर्मर यूज होगा, ये डेटा को रीड करेगा, डालेगा किस? सिल्वर में. सिल्वर में डालने के बाद फिर वहां से एक दूसरा ट्रांसफार्मर चलेगा, डालेगा डेटा गोल्ड में. गोल्ड में डेटा मतलब क्या है? गोल्ड में ये सिल्वर में जो डेटा आ गया उसको फर्दर प्रोसेस करेगा, एग्रीगेट करेगा, काउंट करेगा, सम करेगा. फॉर एग्जाम्पल, you will thrive to write transformers in such a way that it picks up the data from silver and does these kind of aggregations. एग्रीगेशन करके रख देगा, टोटल नंबर ऑफ प्लान्ड बुकिंग्स इतना, टोटल नंबर ऑफ इन ट्रांजिट इतना, टोटल नंबर ऑफ कंप्लीटेड इतना, टोटल नंबर ऑफ बुकिंग्स इतना. ऑफ कोर्स कस्टमर वाइज करेगा, तो वो भी कॉम्प्लेक्स डेटा स्ट्रक्चर से, लेकिन पहले ही एग्रीगेशन करके रख दिया ताकि जब कस्टमर इधर आए तो जुप डेटा आ रहा था. सो एग्रीगेशन रन टाइम नहीं, पहले ही यूजर फायर्स अ क्वेरी, मतलब मैं ये पेज पर आऊं उसके पहले ये एग्रीगेट होके डेटाबेस में ऑलरेडी है. दैट इज कॉल्ड द गोल्ड लेयर. सो ब्रॉन्ज है, सिल्वर है, फर्दर उसको एग्रीगेट करके और एनालिटिक्स के लिए यूज करने के लिए गोल्ड लेयर, राइट. सो दीज आर द 3 लेयर्स. अब यहाँ पे एक ट्रांसफॉर्मर लिखना है टू गेट टू validate bronze and validate, sanitize and everything and bring the data into silver. फिर एक अलग ट्रांसफॉर्मर to bring the data from silver to gold. अब ये तो गोल्ड का जो डेटा है ये जाएगा अपना रेडशिफ्ट में, कुछ डेटा जाएगा मोंगोडीबी में भी, और सिल्वर से भी डेटा जाएगा मोंगोडीबी में, एंड रेडशिफ्ट में भी आएगा. ये रेडशिफ्ट में ये एग्रीगेट्स तो ठीक है. अब ये देखो, ये मिल रहा है आपको बुकिंग्स इतना 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 इतना. अब मैं यहाँ जाता हूँ और यहाँ पे जाता हूँ बुकिंग्स में, यहाँ पे भी बता रहा है इतना इतना इतना, ये सब वॉल्यूम्स ऑफ बुकिंग्स वगैरह, इधर भी बता रहा है बुकिंग्स बाय टाइप वगैरह सब बता रहा है, यू आर हैप्पी. बट अभी यहाँ पे देखो फिल्टरिंग दिया हुआ है. अब अभी आप बोलोगे कि I want only and only those which are for FCL. अब ये कहाँ जाएगा? ये वो एग्रीगेट तो नहीं उठाएगा ना. Now it is supposed to go into a table, and that particular table which has got huge all the data, and from there it will fire a query and it will bring the values. Getting the point? तो वो tables भी update करना है in short. And एक दिन एक टाइम, अच्छा, so I hope this point is very clear to all of you that now you got the concept. So अभी तक जो data warehousing था वो कहाँ होता था? These are the kind of data warehouse. House DBs, right? These are the databases, right? These are used. And asset transaction तो मैंने आपको बता दिया. But अभी क्या concept है? अभी you have S3, you have got Hadoop file system and so on. You have got complete H3. क्योंकि ये जो S3 वगैरह में डेटा स्टोर करने का जो कॉस्ट है वो बहुत कम आता है as compared to the cost of these databases and stuff. And there are other reasons as well. So S3 के अंदर डेटा है. अब ये डेटा is in the form of what? All of this data is in the form of file system, right? Files.
राइट, फाइल 1 एंड सो एंड। तो अब S3 में हम लोग क्या करेंगे, और सब ऐसे ही करते हैं। तो 3 लेयर्स होंगे। ब्रॉन्ज, एक बकेट होगा ब्रॉन्ज का, दूसरा बकेट होगा सिल्वर का, राइट, एंड देन यहाँ पे और एक बकेट होगा कॉल्ड गोल्ड। सो दीज आर द 3 डिफरेंट लेयर्स। तो वो कल हमने जो बात किया था ना, ये वाला, ये देखो, यू रिमेम्बर दिस। OTM से डेटा पिकअप होगा, FR डेटा सिंक उसको पिकअप करेगा, API गेटवे से डालेगा, लैम्डा फंक्शन ट्रिगर होगा, वहां से ब्रॉन्ज में डेटा आएगा। याद है, ये कल हमने डिस्कस किया था। देन ब्रॉन्ज ट्रांसफॉर्मर जो है वो यहाँ का डेटा उठाएगा जो स्पार्क में लिखा हुआ है, या पाइथन और स्काला, एंड इट विल पुट इट इन सिल्वर। अब यहाँ पे सिल्वर में आ जाएगा। अब जब ये डेटा यहाँ पर आ रहा है, नाउ ट्राई एंड अंडरस्टैंड, we need this asset related features over here, and 1000 crore का बात, 1000 crore का बात, I must be able to see the files over here not as files but as tables in the database. I must be able to use inserts, I must be able to use updates, I must be able to work with this as same as I would work with the database. And it must provide me with all of these options of asset related, मुझे options provide करना चाहिए यहाँ पे, करेक्ट। तो उसके लिए ये एसिड रिलेटेड ये प्रोवाइड करने के लिए देयर आर 3 ऑप्शंस अवेलेबल हियर इन द मार्केटप्लेस। वन इज अपाची हुडी, दिस इज वन। Then there is another option, you can use another framework called iceberg यूज कर सकते हो, and there is yet another option called delta lake. Now what does delta stand for? डेल्टा का क्या मतलब, डिफरेंस होता है ना, डेल्टा। सी अ फर्दर लेटर ग्रीक ब्ला ब्ला ब्ला, डिफरेंस बिटवीन 2 थिंग्स और वैल्यूज, ये हमारे काम में। डिफरेंस बिटवीन 2 थिंग्स और वैल्यूज मतलब ये कि अभी इतना डेटा था, अभी इसके अंदर और डेटा हो रहा है, ऐड हो रहा है, सो आपका लेक बढ़ता जा रहा है। दे हैव यूज्ड दिस टर्म कॉल्ड डेल्टा लेक। सो व्हाटएवर द डिफरेंस इज, द न्यू इनकमिंग डेटा यू कैन स्ट्रीम इनटू द डेल्टा लेक, और यू कैन यूज बैच प्रोसेसिंग एंड गेट मोर एंड मोर डेटा इनटू the delta. So data lake, if you are using this framework, will be called as delta lake, right? And these are the guys, founders or creators of, what's interesting, yeah, creators of delta.io. These are the guys who have created, founders. Okay. Anyway, फाउंडर्स ऑफ, सो जो लोगों ने ये फ्रेमवर्क लिखा है ना, उन लोगों ने ये फ्री दे दिया, दुनिया इसको यूज करो। एंड ऐसे ही चलता है दुनिया में। लोग, ये जो बड़े बड़े इंजीनियर्स होते हैं ना, वो लोग ऐसे बड़े बड़े फ्रेमवर्क्स से बनाते हैं, हाई फाई फ्रेमवर्क्स, एंड दे मेक इट फ्री। ये वुड थिंक इनका फ्री में, फ्री में करने का फायदा क्या है? दे मेक इट फ्री सो दैट द वर्ल्ड यूजेस इट एंड द वर्ल्ड पार्टिसिपेट्स इन टेस्टिंग इट। जब 1000 लोग यूज करेंगे तो वो बताएंगे कि तुम्हारे यहाँ पे बग्स है, ये एनहांसमेंट चाहिए, ये इसमें ये फीचर होना चाहिए, ये मिसिंग है, ये फीचर होना चाहिए। तो मेरा प्रोडक्ट और मैच्योर होता है, मेरा फ्रेमवर्क। फिर भी क्या फायदा मुझे फायदा ये कि जैसे जैसे मैच्योर होता है, आई कैन बिल्ड प्रोडक्ट्स ऑन टॉप ऑफ इट। तो जो इसके फाउंडर्स है, उन्होंने एक कंपनी बनाई कॉल्ड डेटाब्रिक्स। व्हाट इज द नेम ऑफ द कंपनी? डेटाब्रिक्स। बहुत बड़ी कंपनी है, दुनिया की बहुत रिस्पेक्टेड कंपनी है, ये इन बिग डेटा वर्ल्ड। इन्होंने पूरा एक प्लेटफॉर्म बना दिया, प्लेटफॉर्म है ये इनका, बिग डेटा का प्लेटफॉर्म। तो जैसे हम लोग स्पार्क के ट्रांसफॉर्मर्स लिखकर वी डिप्लॉयड ऑन AWS, वी कैन डिप्लॉय इट ऑन देयर प्लेटफॉर्म, वी कैन डू दैट, राइट? These people who have founded Databricks, those who are the founders, उन्होंने पहले delta.io बनाया फ्रेमवर्क, and then they started this company called Databricks, and they are millions of dollars का ये कंपनी है, बहुत rich, and they are doing fantastic, right? अब मैं आपको बताऊं फाउंडर्स ऑफ, I'll say Databricks, तो आप मुझे मिल जाना चाहिए, shouldn't be a big deal. Yeah, these are the ones: Ali Ghodsi, Reynold Jing, Mati Zaharia, Ion Stoica. These are the guys who are the founders of Databricks, and these are the people who had, these are the ones who have written that entire framework delta. ये लोग,
ये लो, co-founder and chief executive officer, and then ये सब लोग. Interesting, isn't it? क्या क्या करते हैं लोग, ठीक है. Anyway, so delta lake, this is what we're going to use delta. ये पूरा इसका documentation. और कैसे यूज करना है इसको? सिंपल सिंपल. हमें क्या करना है, ये देखो, यहाँ पे हमने यू कैन सी दिस एज build.spt. ये रहा, यहाँ पे हमने बस ये डिपेंडेंसी ऐड करना है, खलास. दैट्स इट, डन. ये डिपेंडेंसी ऐड करना है, and once we add this dependency, we will create our PW global after global functions. See this, I have created a function out here, a standard function which creates a Spark session out of the configuration. And this Spark session में देखो हमको खाली ये डालना है spark.sql.extension io.delta.sql delta Spark extension, and ये करना है. Once I do this in my configuration, I will be able to specify the format that will be used for the data source while reading, and the format of the data that will be written, not my words. So when I say main, Scala, you remember yesterday I did give you the demonstration of reading the data from a JSON file, correct? But यहाँ से अगर मुझे डेल्टा से रीड करना है तो देखो यहाँ पे फॉर्मेट JSON नहीं है, क्या है? और मैंने JSON नहीं यूज किया, लोड यूज किया. Can see this here? Format is delta. So if the format is delta, I will be reading delta. And what happens is that when you start reading from delta, it actually, and when you write also, it writes in a particular format. It writes the data in a particular format on a file system like S3, or it can be a local file system as well. Correct? It can be a local file system as well, और वो अपना खुद का बनाता है. अब वो कैसे क्या बनाता है? I would like to demonstrate this to you. So and I will give you all you know, a chance to do the same thing on your own machines also. So what I'm going to do is that this is a different machine today. I'm working from office, so I'll just go to my Safari, and then I'll go to my Bitbucket, and then you see कल training था अपना repositories, Spark training, and clone. अच्छा, एक चीज और I would like to share with you guys, बहुत important. All there with me? Yes. Some people at Samsung were fired just recently. Yep. Because वो लोग ने some critical information share कर दिया था ChatGPT पे. ChatGPT के सर्वर पे वो जाके सेव हो गया. ChatGPT have got training models, machine learning का उनके models चलते हैं, which reads their existing data and the data on the internet and stuff, and then they give results. तो कल को वो रिजल्ट में देखो मैंने क्या किया आज सुबह में जल्दी, राइट? मुझे कोड स्काला का इसमें करना था मुझे. कमांड ये स्काला का इसमें करना था, तो ये मेरा स्काला का कोड है. स्काला का कोड के अंदर स्पार्क कॉन्फ़िगरेशन में मेरा की है, एक्सेस की है मेरे पास. मुझे वो कोड फटाक से इसमें लाना था पाइथन में, और मैंने वो टॉप कॉपी करके ना पाइथन प्रोजेक्ट क्रिएशन, अगर आप देखोगे ऊपर मैंने वो कॉपी कर दिया होगा. डिंग 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 डिंग. एनीवेज मैंने कॉपी कर दिया, और उसने तो मुझे तो दे तो दिया, लेकिन वो कोड गया इधर. मैंने ये किया कि बिकॉज आई एम द बॉस. आप अगर करोगे यू आर फायर्ड. Okay. Please be very careful, don't do that. Yep. और ये अगर अपना खुद का सब है तो बात अलग है. इसीलिए एक्चुअली एक्सेस की सिर्फ मुरली के पास है, मेरे पास है, सबके पास दिया भी नहीं है एक्सेस की, और अतिक के पास है. सो कस्टमर का डेटा है यार, वो अगर एक्सेस की तो आई कैन राइट कोड इन ऑर्डर टू डिलीट सम डेटा, सब डेटा उड़ जाएगा. Yes. Be very careful. The first thing that I did is that I went to Safari and I went to my S3. यहाँ पे हमारे पास ऑप्शन होता है, यहाँ पे अपन जा सकते हैं सिक्योरिटी क्रेडेंशियल्स में. एक्सेस की मैंने ड्रॉप कर दिया आज सुबह. I realized I've done a grave mistake. ये नहीं करना चाहिए. I am sharing this with you all. It's important for me to share. कैसे मैं share कैसे नहीं करूँ,
राइट। तो मैंने यहाँ पे ये जब ये नया वाला की है, ये की किसी को मिले तो चलेगा, सीक्रेट की नहीं है, दिस इज द एक्सेस की। Yes. सीक्रेट की आपको नहीं पता है, तो मैं खुद भी अभी सीक्रेट की अगर मैंने कहीं सेव नहीं किया तो आई कैन नॉट गेट द सीक्रेट की अगेन, वंस एंड फॉर ऑल मिलता है। तो 2 कीज वो जनरेट करने देता है, 200 ज्यादा करने भी नहीं देगा। बी वेरी केयरफुल, नेवर एवर डू दिस और एल्स वी विल बी इन नी डीप ट्रबल, राइट गाइस, राइट। Yep. Yes. Yes. Thanks. And in future, we will use this. We will use this in future. We are not going to keep the access key or anything over here. We will use a service called AWS Secret Manager. So our application will dynamically Secret Manager. Yeah, Secret Manager. So all the access key, passwords, and everything will be stored here. Yep. And dynamically अपना programs यहाँ से automatically pick up करेगा। Yes. तो कहीं पे भी हार्ड कोडेड होगा ही नहीं, Yes. राइट। दूसरी बात, नेवर एवर पुट द सीक्रेट कीज एंड एक्सेस की ओवर हियर लाइक दिस एट ऑल, जैसा मैंने लिखा है। नो, यू विल नेवर डू दिस। मैंने यहाँ पे डाल दिया है जल्दी जल्दी में, ठीक है, नहीं, लेकिन ठीक नहीं है, नहीं करना है। What you are supposed to do is that when you run this program, so what are you supposed to do? Keep that access key and secret key safe with you. Do not put it in the code. I repeat, do not put it into the code. What is it that you're going to do? ये आपका है, यहाँ पे आप क्लिक करोगे, you will say edit configuration. You say edit. ये रहा configuration, यहाँ पे program arguments है. You will say -d. You will say access dot key. Okay, is equal to, ये IDE में है, आपके सोर्स कोड में नहीं है, जो भी आपका की है -d, ओके, access dot secret is equal to जो भी सीक्रेट है वो, और फिर आप प्रोग्राम को रन करोगे एंड वहां पे प्रोग्राम में आप लिखोगे टू गेट द वैल्यू ऑफ दिस रन टाइम, सो इट विल नॉट बी हार्ड कोडेड इन योर सिस्टम, इन योर Right. आई होप आई एम crystal clear to everyone, Yes. right? Please do not violate this. जॉब तो नहीं जाएगा आपका, एक सैलरी में कट लो। Well, I'm sure all of you have understood this point, right? So coming back here, come on. So first and foremost, first thing first, I am going to demonstrate the code to you. See, it's a global functions. ये bookings वही हम लोग जो schema वगैरह की बात कर रहे थे। So अच्छा, हाँ, एक मिनट। I will have to go to Bitbucket, और वो मैंने Spark Training की तरह अपना repositories, Spark Training. I'll say clone, copy, LJ, file, new project. This is a different machine, as I said, so I'll have to pull again. And this will be in trainings, in-house. Okay. Here you go, right? Slash Spark -training. And I'll say clone. SPT project. Okay, so we have got the same code that we had written yesterday. We have that over here with us, right? So what I'm going to do now is that I'm going to pick up the file. I'm going to pick up the file from my, so what is it that I want to create? I want to create bookings JSON, bookings. So I'll just pick this up, bookings, the one that we had yesterday. I'll command C here and I will go back. Okay, I'll close this Python project now. I'll come back here and I'll say SRC, exactly within SRC, I'll say okay. And I will have a file created here. Yesterday we had created a file, right? Other JSON also was there. Where किधर चला गया? अच्छा, वो commit नहीं हो गया शायद. I think it's in data. Data. Oh, okay, good, cool, got it. Right. So ठीक है, चलो. So I've got bookings now. Here I have data के अंदर bookings होगा, but उसको ऐसे ही रहने देते हैं. SRC के अंदर I have created bookings.json. Okay, I've just copied. So I'll push it, then you can just take the pull, and you will also be able to get the file. Now, what I'm going to do here is that I'm going to write a new Scala class, and from here onwards, I'm going to write. I'm going to create a package, and the name of the package is going to be Delta. Okay, and now within this Delta package, I'll say Scala class. I'll say object, and I'll say
A1 read. Why write A1 A2? ये project में कभी भी ऐसे class के नाम नहीं देने हैं. Only while learning. Why do I do that? So that you know it's in the order. So कल को मुझे देखना भी होता है, it becomes easier. अच्छा पहले ये पहले ये पहले ये पहले. So A1 create delta table. Okay. Okay, fine. One more important thing. Never ever name your classes with verb. Never do that. Never. It's very bad. You must always name the classes as nouns. Methods must be verb. Functions must be verb. So I'll say delta table creation. This is how I'm going to name it. Okay, coming back over here, I'll say main. So main function ban gaya. Now, after the main function is created, I'm going to do exactly the same thing that I've done over here. First of all, I'm going to get what? The Spark session. And कल भी utility हमने बनाया था ना, util बनाया, right? So I'll say utils के अंदर क्या था हमारे पास? Utils के अंदर, अच्छा Spark session वगैरह utils में नहीं बनाया था, ठीक है कोई बात नहीं. So we're going to create, we will pick up Spark session वगैरह ये functions हम लोग यहाँ से ले लेंगे. Okay. Command C, or rather I'll remove this from here. I'll go to util, I'll go to this class, and I'm going to put these functions here, right? So that I can use it from many places, and I'll not make it private. I will not make it private. Okay, so it's by default not private. I have imported this. Spark session is also imported. Cool. Coming back over here, so this will give me an error. So I'll say command 1 and I'll import it. Okay, ये हो गया. So import हो गया, it works. Right? यहाँ पे कोई problem नहीं. यहाँ पे कोई problem नहीं. Correct. Right? So my earlier classes are getting compiled. So now what I want is that I'll say val spark, okay, is equal to, I'll say tw spark session. Okay. It says, do you want to import? You know, so I'll say yes, I want to import. So import ho gaya. If I want to import everything from this particular class, then I'll say underscore. Automatically everything will be imported. So here I have val spark. So I've got a Spark session over here. Now I can start using the Spark session. So let me first write simple piece of code in order to read this. How will I write, friends? Come on. Spark dot what? Read, isn't it? I'll say dot read. तो आपको reader मिल गया, Spark का reader मिल गया. And then I will say, see, I can directly use JSON and I can load it. There are different ways. I'll say format is JSON. And then I can say load. ये भी कर सकता हूँ मैं. And यहाँ पे I'll give the path. What is the path? I'll say slash users. You will have to, when you take the pull, you will have to make changes to your folder. You know, so users slash, I'll say Shakir slash, and then I'll say, hey, no. यहाँ पे I'll say src slash, because this is the same project, src slash bookings.json. And I'll just confirm whether I am able to, I'll say dot show. I'll say dot show. So let me check whether this works or not, right? So let's check this. So I must be able to get the data of bookings.json here, show. By default, it will show only 20 rows. So don't be surprised. Okay, you will say that, hey, I've got so much of data, but I'm not getting it. Why? In order to, you know, because it just show will never be there in your production, right? Show is there only and only so that you can just test it over here. So it will not. Okay. So what's the error? Illegal class, storage ID, blah, 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 access direct buffer module. Yeppy. See this. You have to click right mouse button, you should open module settings, go to project. You're using 19 version of Java. No, I must be using 1.8 version of Java. I'll say apply. I'll say modules, source, and the language compilation level will also be 1.8, right? Using 8. Apply. Okay. Right, याद रखना it must be 1.8 या फिर 11 भी try करना, 11 पे भी चल जाना चाहिए. Shouldn't be a problem. Okay, started successfully. File read किया देखो, नहीं वो वाला तो warehouse का file. हाँ, it has read the file. Here you are. I've got the data.
B001 speaking B data. So this is successful. So I have read the JSON data because there must be some source of the data, right? Before writing it. What are we doing? We are learning how to write, isn't it? Now what I'm going to do is that I'm going to go to my Finder. And in the Finder, see in my local, my user folder, my Shakir is my user folder. Okay, there is something called Delta. You can see this Delta. I will delete everything from it. I will delete it, or else why delete? I will create another folder called, okay, I'll create file, I'll say new folder. I'll give the name of the folder as delta-training. So this is my root folder. In this, I will create tables, delta tables. Okay, and you remember I did make you all install this big data tools. So what I can do is I can just simply select this. I'll say plus, I'll say local file system. I'll select that TW delta, you see, Shakir and delta training. You see this open, not TW delta. I'll say test connection successful. I'll say okay, and I will be able to get the entire path. Here you go. Abhi isme kuch hai nahi, which is okay. So what I'm going to do now is that I'll minimize this. I'll close this. I will now start writing to the table. I will create delta table. If I have to create a delta table, I'm going to write. Writing means what? Do I need a reader or a writer? Come on. Alright. I need a reader. A writer. So I'll say val. I'll give the name of this as df. This is the data frame that I have. Okay. Now this is the data frame that I'm going to write. So I'll say df dot and I'll say dot write. You see this here? Sorry. Oh, yes. Why? Because show will not return to you the data frame, load will return to you, right? So show to wo show kar dega, right? That it does it's a void. Okay. So I'll say df dot and I'll say write. Can you see this? I'll get a writer. Correct? Right. Here you are. Okay. Now, after writing, now I got to specify what will be the format. This is very important format. The format is supposed to be delta. So the format is supposed to be delta. Now, if I go to use delta, okay, I will have to go here to my build.sbt in my project. Have I included delta library over here? Yes, I have. Spark trading. Yes, I did. You see this delta is already included here because yesterday we just copied and pasted everything. So it is included. It is there. Okay. So coming back here. So delta. Okay. What else? If there is anything else that I'm missing, just I'll go back. Option merge schema 2 is not important, and then that's it. Right? I'll just say dot and I will say global functions nature. Yeah, that's okay. See, save mode dot override. What will override do? It will take the data from here and it will override the existing data in the table. Right? And what will be the path of that table? I'll say slash users slash Shakir slash delta training. You remember I just created delta training, and within that slash, I want to create the name of the table, and the table is going to be bookings. Don't give JSON or anything. Uska khud ka Parquet format hai, Parquet. Okay, it's PARQUET, but you can just, people pronounce it as Parquet. Ye ho gaya, save ho gaya. Correct. Now let me run this and show you. देखो अभी यहाँ पे भी कुछ नहीं है ना, delta training में कुछ नहीं. You can also create folders. You can specify that within delta training I want to. So it will actually automatically create a folder. So let's do this. So I'll keep this also up. I'll say refresh. See, it has automatically, can you see this? It has automatically gauged the schema. Schema खुद से ले लिया उसने उसके basis पे. अब यहाँ पे click करके I'll say refresh and you will see for yourself. You see bookings is the folder created. I expand this and this is that. ये सब बहुत important है. Folder उड़ाने का नहीं. It's बहुत important. Now when I double click on this, you see I get the data. This is the beauty of this this big data tools, that it helps you to, it gives you a viewer. Otherwise, if you try to open this file from your file system, it will not give you this beautiful user interface to see the data. Here you are.
Correct? Beautiful, isn't it? Now see, how many files do you have over here? One single file. Now what I'm going to do is, I'm going to run this once again. I'm going to run this once again. और एक काम करते हैं, अच्छा, मैं एक काम और करता हूँ. I will now show you how will I read. Okay, I will write code immediately for reading also. So this is where you are, A1 delta table creation. Now I'll just say A2 delta table read. Okay, I'm doing this. Now when I say delta table read, I've got same Spark session vagara, but then I'm not going to read from JSON. I'm going to read from where? I'll say Spark dot, I'll say read. What is the format supposed to be? Come on. Delta. And do you need save? No, but you will have to give the path. You'll have to give what? The path. So I'll say the path is, let me be very sure. Reading the table. Do I need to give the path, or else I can just simply say load? Okay. So format hai to path bhi de sakte. You can very well give path also. I've tried that as well. So I'll say load. Load again. I'm going to do what? Slash user slash. If it is S3, the path will be S3 bucket ka path. So Shakir, and here I'll say delta hyphen training slash, and I'll say bookings. I won't say .json or anything. Delta hai na, usko samajhta hai, right? Once I get this, I'll say .show. So let me run this and see whether I am able to get the same data from this bookings table or not. Okay, so can you see this here? I'm getting the data. I'm getting the data from here. It has read the Parquet file and it is giving me the data. Now, what am I going to do? See this. I'm going back to my table creation. Please note that I'm reading the data from bookings.json. I will go ahead in bookings.json here, and I will make a change over here. Customer ID, I'll say Z9999 for the booking ID B001. I'll save this, and here I'm going to run this code again. So it's going to read the latest booking.json. I will click here. बहुत important चीज बता रहा हूँ, please देखना. I'll say run. કેટલા time લે છે? Okay, it has done the needful. Now I click over here on bookings and I say refresh. Can you see this refresh? देखो कितना फाइल है अभी? कितनी फाइल है? दो फाइल उसने अभी ये हो गया, 2 फाइल है. हाँ, ये वाली फाइल के अंदर देखो, पहले वाली फाइल में कस्टमर आईडी इज 009, और ये दूसरी वाली फाइल में देखो वो पुराना डेटा है, कस्टमर आईडी C001. Correct? This tool is giving me the data, I mean the files in the order of जो पहले, जो अभी लेटेस्ट बनी है वो पहले देता है. दोनों फाइल मेंटेन किया है. What does that mean? It maintains, one word answer, it maintains हिस्ट्री. Okay, not bad. Better answer, it maintains versions. Maintain versions. अरे क्या बड़ा फीचर है यार ये. अगर कल को डिग करके प्रभाकर will not ask for it, the business will ask for it. Transfer says
फला टाइम पे वो पर्टिकुलर उसका क्या वैल्यू था, अभी चेंज हो गया लेकिन क्या वैल्यू था, we will be able to fire temporal queries. We will be able to travel in time. I repeat, we will be able to travel in time. Once again, I'm repeating, we will be able to travel in time. And there are queries provided, there are ways provided in Delta to travel in time and get the queries. So now if you see, by default, it's going to give you the latest. So now if I click here and if I run this, it's going to give me the latest. It's going to give me the latest. मुझे यहाँ पे कुछ बोलने की जरूरत नहीं, कौन सा version दो. Though I can specify the version as well. I can very well specify the version as well. अब एक चीज तो वर्जनिंग हो गया, so I can travel in time भी एक फीचर हो गया. Another is what, you know, it also in this delta log and this, देखो logs बनाता है, and all of this, it maintains the change that has happened. I repeat, it maintains the change that has happened. That means at any given point in time, I can get कि पहले क्या था और अभी क्या है, वो भी पूरा मुझे मिलेगा. Okay, so see this here now, I get Z99. मुझे तो latest मिलेगा, but if at all I want, I can travel in time and get the previous versions as well. This is such a fantastic feature and it is so very much important for us, right? So this is, you know, how it works. Instead of giving you all, I will anyways push this code, but I will not make you all write all of this code. So Delta demo started. I will, you know, I will explain the other features also to you all now, so that you get sufficient time and you can do the R&D all on your own based on the time, you know, बाद में आप कर सकते हो. और मजा आएगा आपको, लाइक यू नो, जब यूज केस होगा आपके पास, जब मैं टास्क दूंगा, जब अपनी टीम के पास टास्क होगा कि ये मुझे फंक्शनैलिटी अचीव करना है, आपको पता है ये फीचर्स, इट विल बी इजियर फॉर यू टू डू इट and you will do it the right instead of doing any kind of a work around. So see the features that you have. Now this is something that I've already written. Read a table, you have already done that, and after reading the table everything else remains exactly the same. जो हमने सीखा था already, कल जो हमने सीखा है वही सब, सिलेक्ट कुछ करना है, ये करना है, वो करना, and then you explode करना है, and then you want to you know, drop a particular column, you want to with column, everything is going to work exactly. Why? Because it reads the delta table after all and gives you what? Gives you what? What does it give you? The same data frame, na? Data frame ही तो दे रहा है ना, यहाँ से val sum df is equal to, वही तो दे रहा है वो, मैं यहाँ से शो निकाल दूंगा तो ये वही डेटा फ्रेम है ना, df dot with column है अपने पास, with column everything the same things dot, you know, select है अपने पास, everything same thing. So nothing, you know, it's just that the source is different and the format is different and you get all of those features, but otherwise ठीक है. So ये हो गया, and then you know, I'll show you what are the other features. So read कर सकते हैं आप लोग, कंडीशनल अपडेट कर सकते हो. अरे बाप रे बाप, ये तो बहुत धमाल चीज है. सीरियस कंडीशनल अपडेट. I can just simply, okay, what if the table is already there? So one way is what, this is the way I have taken the table, you know. Okay, this is the way I have read the table, friends. This is the way I have read the table, spark.read.format and stuff and all. I can show you yet another way of reading the table. Okay, table read with for table. Okay, yeah, okay, so I'll just remove everything from here. Okay, and you know what, I can create something like this. I can create something like this. I can just simply say bookings table delta table. I'll have to just simply import this, and global functions नहीं है मेरे पास यहाँ पे, तो I'll just simply say बना लो क्या global function, create an object called global functions. No. So utils के अंदर I will have Scala class, I'll say global functions. You can give better names and I'll say ये वाला मैं डाल दूंगा get delta link local path. So def, this is the name of the function, colon, it will return a string is equal to, this is how you write code in, you know, you write. So यहाँ पे हमको string return करना है ना, colon string. Okay,
but it's saying you are returning nothing, so you have to return something. So I'll say return statement लिखना है इस column में, नहीं लिखना है, users slash charter slash delta slash trade hyphen trading, हो गया, right? So ये redundant parenthesis की जरूरत नहीं. So I'll go back over here, global functions, import the class, ये अपना global functions है, and get local data path. ठीक है, तो slash bookings, correct? तो हो गया, done. So I've got bookings table. Now this booking table is actually what? It's actually nothing but a data frame. Data frame. So I'll say dot, and I'll say, acha, it's not yet a data frame. Okay, so bookings tables are acha. So you can actually don't need to create a data frame, and you can directly fire an update like this. See this? Can you see this here? I can directly fire an update. Such a fantastic feature. Bookings table dot update expression. I'll have to import expression from Spark SQL functions expression. If you don't want, you can just say underscore here so that it will now import all such functions. And you see the expression booking ID is equal to 1003. Then set. अब ये बहुत powerful. Set the value of this to so and so. Set the value of ये map है map. Map ऐसे लिखा जाता है. This is the key. This is the value. This is the. So I can keep on writing. Can you see this here? This is one particular column, the value of which will be updated. I can very well have comma written over here, and I can specify maybe not transport type. Maybe I'll say order underscore date is equal to, I'll say expression. Something else. Something like this. Something like this. अच्छा. मैप कॉमा करके नहीं तो मैप में कैसे डालते हैं वैल्यू? हाँ सॉरी, कॉमा करके डालते हैं. ठीक है, perfect. Right? So you will be able to, if this is the condition, then the value of this field will be so and so, the value of this field will be so and so, that you can just go ahead and change the values. Right? So you can fire an update like this. And again, this update will be transactional in nature. Matlab ye either everything will be committed or everything will not be there in S3. So you can rely on the consistency. Ye ho gaya. Now, after doing an update, you see, you can always convert this to UDF. I can always say bookings table dot, not UDF, sorry, to DF, to data frame. Can you see this? There is a function called data frame here. And what this data frame, once it is converted to the data frame, do you have all the options of which column and everything else? Yes, but I'll just simply say show. So this will show me the updated data. This will show me the updated data. If the condition matches, booking ID is equal to B03, हाँ, तो booking ID 003 का transport type change हो जाएगा. Brilliant, isn't it? Brilliant. So I'm not going to spend time now demonstrating everything. I'm going to share all of this code that is already written. You must, and I'm going to, but still explain all the features that are there so that you know how to update that stuff and all. If you are not using Delta, then you cannot update particular rows in the file that is already there, isn't it? यहाँ पे आप कर सकते. Okay. So you see this B003 का air मैंने एक suffix डाल दिया 001. Okay, isn't it? So you can do updates like this, friends. You can delete from a table based on some condition. Era expression you can delete from a table. You can do upserts. ये तो बहुत ही powerful है. Upserts. You remember right in the beginning I did mention. Right in the beginning I did say that there is a feature wherein you in one single statement, in one single instruction to the destination database, that hey, these are the new rows to be added and these are the ones to be updated. देखो कितना powerful है. New bookings ले लिया मैंने, new bookings JSON से मैंने लिया. These are the new bookings. मैंने ये कैसे बनाया देखो, how did I educate myself on this? See here, I already have bookings.json which I have written to what? Which I have written to bookings. Am I right? अब मैंने क्या किया है, नया bookings, just imagine OTM से नया booking आ रहा है, तो मैंने वो नया booking जो OTM से आ रहा है, ये 3 नया booking मैंने यहाँ पे डाल दिया. 3 नया booking नहीं है, लेकिन इसमें से ये नया है, these 2 are the ones which are already there. Come on, yes or no?
Yes. With me? Yeah. See this? यहाँ पे updated FCL, updated LCL ऐसे डाल दिया और यहाँ पे new air ऐसे डाल दिया so that we can distinguish. तो ये दो रिकॉर्ड क्या होना चाहिए? अपडेट. और ये क्या होना चाहिए? Tell me. Insert. होना चाहिए. करेक्ट. सो यहाँ पे A5 अपसर्स काला, मैंने न्यू बुकिंग्स का डेटा ले लिया एंड देन यहाँ पे न्यू बुकिंग्स डॉट राइट फॉर्मेट इज डेल्टा. आई एम राइटिंग इट टू न्यू बुकिंग्स. व्हाई डू आई नीड टू राइट? आई डोंट नीड. ये तो मैंने जस्ट फॉर द सेक ऑफ डूइंग इट मैंने किया होगा, बट मेरे पास ये न्यू बुकिंग्स का डीएफ आ गया. अभी मैं क्या करूंगा? आई एम गोइंग टू से डेल्टा टेबल डॉट फॉर पाथ, मतलब आई एम गेटिंग द रेफरेंस ऑफ द टेबल ऑफ बुकिंग जो एग्जिस्टिंग है. अब ये देखो क्या ब्यूटीफुल है, बहुत सिंपल है, पप्पू है. बुकिंग्स टेबल जो है वो I will create an alias name to it. Alias name is what? A nickname, pet name, nickname, yet another name, right? ऐसे है. तो old bookings, for example, or existing bookings, I could have given the name. New bookings.df, I'll say merge it with new bookings.df. New bookings मेरा ये रहा. इसको इग्नोर करो, ये इसकी जरूरत ही नहीं है. राइट. न्यू bookings.df, दैट्स आर, दोस आर न्यू बुकिंग्स. न्यू बुकिंग्स मतलब नया डेटा आया है, उसके अंदर वो बुकिंग का भी डेटा है जो ऑलरेडी है मेरे पास और एक नया रिकॉर्ड भी है. एंड कंडीशन क्या है? आपको कंडीशन देना पड़ेगा. आप मैच कैसे करोगे? वेयर कंडीशन कैसे डालोगे? तो वो इंटरनली वो वेयर कंडीशन डालेगा. तो हम बोलो कंडीशन क्या है? ओल्ड बुकिंग्स का बुकिंग आईडी मस्ट मैच टू द न्यू बुकिंग्स का बुकिंग आईडी. तो अब व्हेनेवर मैच हैपेंस, ओल्ड बुकिंग का मतलब यहां पे जो बुकिंग आईडी है और बुकिंग आईडी जो यहां पर है अपने टेबल के अंदर, यहां पे जो बुकिंग आईडी है डेल्टा ट्रेड ये रहा. राइट. यहां पे B001 B02 ऑलरेडी एग्जिस्टिंग है तो वो मैच करेगा. करेक्ट. वो मैच करेगा. राइट. एंड वो मैच करेगा. तो अगर मैच हो जाता है तो क्या? अगर मैच हो जाता है तो हम उसको बोल रहे हैं भैया अपडेट मारो. कैन यू सी दिस? न्यू बुकिंग्स डॉट बुकिंग आईडी, बुकिंग आईडी को न्यू बुकिंग्स डॉट बुकिंग आईडी कर दो जो आया है. राइट. एंड ट्रांसपोर्ट टाइप को न्यू बुकिंग्स डॉट ट्रांसपोर्ट टाइप. करेक्ट. बराबर है. राइट. सो बुकिंग आईडी must be equal to the booking ID that is there here and transport type must be equal to new bookings. तो जितने कॉलम्स चाहिए आपको, जितने जो जो चेंज करना आप सब चेंज कर सकते हो. एंड व्हेन नॉट मैच्ड, अगर मैच कर दिया तो ठीक है. तो दिस इज कॉल्ड व्हाट? अपडेट. whereas this is called insert. that is the reason why we call it absurd. अपडेट एंड इंसर्ट बोथ एक ही स्टेटमेंट में, एक ही शॉर्ट में. सो इंसर्ट क्या करेंगे हम लोग? इंसर्ट करेंगे नया. सो नया मैप आप बनाओगे. दिस इज वन, this is the object that you will be. So जितने भी रिकॉर्ड्स है जो मैच नहीं हुए वो नया बना देगा. बुकिंग आईडी will be the booking ID from new bookings. Customer ID will be this, and this you can write all the expressions in the world that is possible under the sun in data frame. आप इसको जो चाहिए आप यहाँ पे डॉट करके उसको अगर आप कॉन्कैटिनेट करना है, कुछ करना है, आप सब कर सकते हो. आप ट्रांसफॉर्म कर सकते हो. एंड में आप बोलोगे डॉट एग्जीक्यूट. आप जब डॉट एग्जीक्यूट आप कर लोगे तो यहाँ पे बुकिंग टेबल्स डॉट टू df डॉट शो एंड यू विल बी एबल टू सी द चेंज्ड डेटा. राइट. लेट्स डू दिस. अच्छा, अदरवाइज in the interest of time I'm not making any changes here. I am not demonstrating, but you can trust me, I have tested everything and it works like a charm. Fantastic चल रहा है. तो ये बहुत बड़ा फीचर है. You got to remember, I have shown you these are the features, my dear friends. I have shown you read conditional updates based on some condition. Updates ही करना है आपको, inserts नहीं करना है. आपको delete करना है conditionally, आपको upserts करना है. Update and insert both. Reading the older version, मैंने अभी बताया था, it maintains the version, right? It maintains the version. Okay. So अगर आपको पुराना version read करना है, so you will say option version as of 0. Version as of the 0th version देगा, first version देगा, second version देगा. If the version is not available, then मैं भूल गया क्या होगा, but then otherwise वो देखना होगा अपने को. But then otherwise you must know which particular version you want. इसमें ये भी फीचर है, आगे चल के है मेरे पास.
आप डेट एंड टाइम दे सकते हो, कौन सा डेट्स का वर्जन चाहिए, यू कैन ट्रैवल इन टाइम, आई विल शो दैट आल्सो टू यू, सो यू कैन गेट व्हिचएवर वर्जन यू वांट, राइट। ये स्ट्रीमिंग है, मतलब डेटा आते जा रहा है, आप डेल्टा टेबल में लिखते जा रहे हो, डेटा आते जा रहा है, लिखते जा रहे हो, ये भी हम लोग यूज कर सकते हैं। बट कल हमने डिस्कस किया था, इसके अंदर खाली एक ही क्या है पॉइंट, दैट we will have an issue, not an issue, but then cost will be a problem, because not a problem as such, but then थोड़ा सा cost ज्यादा आएगा, right? Because you will have to keep on running your servers. Streaming है ना, डेटा आते जाएगा, आपका Spark sessions चलते रहना चाहिए। अभी बैच प्रोसेसिंग है, एवरी हाफ एन आवर में हम ट्रिगर करेंगे, 2 मिनट के लिए चला, 3 मिनट के लिए, 5 मिनट के लिए चला, फिर खत्म मत, राइट? ऐसा है, तो जब नहीं चल रहा है तो कॉस्ट नहीं आएगा सर्वरलेस। ओके, बट देन अदरवाइज आप स्ट्रीम भी कर सकते हो, राइट? यू कैन गेट द स्ट्रीमिंग दैट एंड स्ट्रीम। ये तो बहुत इंटरेस्टिंग है, रीड स्ट्रीम ऑफ चेंजेस टू द टेबल। स्ट्रीम ऑफ चेंजेस टू टेबल, ओके, एनीवेज आई डोंट रिमेंबर वो मैंने क्यों लिखा था। अच्छा, अभी टेबल का बैच रीड्स एंड, अच्छा ये जितना भी मैंने यहाँ पे अपना पीओसीज है ना, डियर फ्रेंड्स लिसन, बहुत इंपॉर्टेंट है, ये जो डॉक्यूमेंटेशन है, ये एग्जैक्टली मैंने जो आई हैव गॉन थ्रू द डॉक्यूमेंटेशन, इट इज इन द सेम ऑर्डर, it is exactly in the same order. You getting the point? In the same order, exactly. So you can if there is something out here, you can very well go here and you can find the same topic and you can read more about it. So you see this now, right? So there is another JSON file that is created over here called people 10m 10 million या ऐसा कुछ, 10m for updates.json ये है, and then this is these are the records. I've got 20 records over here of people, नाम है, फर्स्ट नेम, लास्ट नेम एंड सो ऑन, ओके। सो यहाँ पे क्या डेमोन्स्ट्रेट हो रहा है, क्रिएट टेबल, सो ये क्रिएट फॉर अपडेट्स टेबल, सो इट्स द सेम थिंग, मर्ज स्कीमा ट्रू, ओवरराइट, it will just simply write, no big deal, it's the same thing, nothing new to learn out here. Then create table, अच्छा यहाँ पे it's again the same thing, no difference. Okay, now I have written this code in order to write it to S3. ये S3 में लिखा जाएगा, and I tested this, it works like a charm. S3, big data POC delta, it runs, it actually will put the data where? On S3, right? So you can very well write it, and no difference. Either write it on local, but you will always work on local unless you are working on the real life project and you want to put it to S3. वो हम लोग बाद में, but अभी local पे चलाने के लिए, whenever we are running this on EMR, we will be using S3. Otherwise, you will avoid using S3 unless you want to just test it once or twice. Then you can also have an SQL written like this. See, I am creating a table on the fly using SQL. I'm creating a table, create table command, right? Print, replace, table creation done. So this is one way of creating. And then creating the table with data frame. So this is also how I can create a new table. I'll read the JSON and then save as table, we accept the default of bookings. Now when I do this, I have seen that it actually creates over here a folder called Spark Warehouse. ऐसा कुछ एक folder बनाता है, Spark Warehouse, default.spark warehouse. उसके अंदर Park के files बनाता है instead of making it in the Park. So you see, this is also one of the ways of specifying the path, and this is also just one of the ways of save as table. It actually creates a table, and the schema of that table will be default, and the name of the table will be bookings too. All right, and then this delta table builder. This is also yet another way of creating the table. So you can very well create tables on the fly of a particular data structure. देखो क्या फर्क है, try and understand. Here, when I'm creating the table, the structure that is being used, and if I don't give this, the structure will be picked up from JSON. But if you are creating a table like this, you are specifying the structure and you are not depending on the structure of the source. So अगर source में वो field है ही नहीं है, तो फिर भी आपको ये table को read करते time error नहीं आएगा, field not found. Am I right, Murli? Right? Okay, I think it's unmuted.
Okay, writing to an existing table. So if you already have a table that is there and if you want to still write to it, then in that case, you see this, you can say, you'll read, ye to humne kiya hai. Create table with delta with partition. So when I'm creating a delta table, you see this, I am creating it with a partition. You can see this partitioned by customer ID. So we can write scripts in order to create the tables, or else at the time of creating the table with some data already available also, I can very well specify the partition key. Now, when I do this with the partition key, abhi dekho ye kaise chalega. I would like to demonstrate this to you. See, what I will do here is, I will delete everything. I'll just click right mouse button bookings and I'll say delete. I delete. So I've deleted the entire folder. Okay, don't do this in real life. You will lose all the data. And what I'm going to do here is, while creating the table, can you see this? I hope you are all there with me, friends. All there? Yeah? Yes. Yes. Okay. What I'm going to do here is, thank you. I'll say partition by, I'll say customer underscore ID. This is what I'm going to do. And I will make sure that I do have some data with, customer ID C00144. हाँ देखो दो records है C004. C01 का भी दो records है. C01799 का दो record है. C01 का भी दो है. Right? और इसका एक record. So what I'm going to do now is, I'm going to run this and I've said partition by this. See now what it does. It will create folders. It will create folders for each customer. And in real life applications, this will be super fast when you do retrieves. So if you say where clause agar aapke paas hai, you say where customer ID is equal to so and so, it does not need to check the value of the customer ID of each and every one of those millions of rows in one single folder. Why? Because it knows that if the customer ID is equal to so and so, then definitely the name of the folder will be so and so, और उसी में जाकर वो पूरा data लेकर आएगा. Right? So I just go back over here and then I'll show you. I'll say refresh. ये देखो bookings. Can you see this, friends? देखो कैसे बनाया उसने. फोल्डर का नाम ही कैसे दिया. देखो customer underscore ID is equal to C001. यहाँ पे अगर आप देखोगे, you will find only and only those records where the customer ID is equal to C001. अच्छा, यहाँ पे उसने वो कॉलम का वैल्यू भी नहीं डाला, बिकॉज जरूरत भी नहीं है ना. व्हेन यू रिट्रीव, it's going to pick up this value. Similarly, you see this here, C004, दो records. C007, one record. C009, three records. Perfect. And Z, only one record here. Isn't it? So this is how it does partitioning. Very important feature. And Murali knows, a lot about partitioning. So he will also guide us. Read table, baat ho gayi apni. Override with replace where. हाँ, ये देखो. Here, what we are doing is, so I'm just creating a data frame here from this hard-coded data over here. I'm creating a data frame. And then what we are doing here is that we are saying replace where. So when you say option where, this is again a feature of Delta. You say replace where, तो override करेगा वो. तो जितने भी rows है where this condition matches, those rows will be completely overwritten with the data that is there in this data frame. Atik, clear? Tufail, clear? Yes, right. कैसे कैसे फीचर से देखो. प्लीज अपना खुद का कुछ इनोवेशन नहीं करना. पहले देखना कि वो फीचर जो आपको करना है वो डेल्टा में अवेलेबल है कि नहीं. जरूर अवेलेबल होगा, बिकॉज दे हैव बिल्ट दिस फ्रेमवर्क कीपिंग इन माइंड thousands of use cases and thousands of projects are running on this. तो जो हमको चाहिए वो तो जरूर होगा ही होगा इसके. अच्छा, delta table history and details. So see this now, this is how you get the reference to the table, and then you say history and dot show. It will give you the history. It will give you the entire history. देखो ये आपको पूरा history दे देगा कि कब कब क्या क्या change हुआ था, वो आपको बताएगा. Dot history dot show and dot detail dot show. आपको detail दे देगा. In detail is like describing the table. आपको बता देगा कि उसके अंदर fields कौन से है.
Okay. So you see this, it has described the table and it tells me कि इतने partition है कि नहीं है, number of files कितनी है, min writer value क्या है, all that stuff it will show you, right? And it will give you the details as well. So this is what you can use, if at all you want to, but उसका use case अपने पास है ही नहीं वैसे. अच्छा, अभी delete, updates and merge. Delete conditionally, same stuff, कोई big deal नहीं है, that's it. Delete and you can give a condition here. So wherever birth date is less than this, those records will be deleted. Update, again, we have talked about it. Delete delta table dot update expression. If this is the condition, then these are the columns that will be updated with the new values. All right, same stuff here. Upserts, मैंने आपको already बताया. Upserts के अंदर यहाँ पे मैंने क्या किया? I have made changes to multiple columns out here. And यहाँ पे कुछ एक additional चीज भी है, ये देखो. When matched, then update. When not matched, ये insert का expression है and then execute. Yeah. So same stuff. So upsert से यहाँ पे. लेकिन insert, देखो यहाँ पे update use किया, update expression नहीं. यहाँ पे insert use की नहीं किया, insert expression किया है. So the way you write things is a bit different. यहाँ पे column use किया, यहाँ पे column नहीं use किया because I'm using expression. This is the standard thing across. If expression है तो you can just simply put the things into, ये तो यहाँ पे भी मैं आपको बता सकता हूँ. Take a look, see. Expression में और इसमें क्या फर्क है, देख लो. See this. यहाँ पे I am using an expression. Can you see this expression? अगर expression है तो I can write the expression over here and it will automatically do the evaluation. और अगर expression नहीं है तो call डालना पड़ेगा आपको and so on. Similarly, select statement में भी I can either say select here like this, see, or else I can say dot select expression. अगर मैं select expression करूंगा तो I have to give the entire expression over here. I'll say star, comma, ये पूरा के पूरा explode, ये पूरा के पूरा I will give in what? Involved business entities and so on, right? फिर मुझे ये explode function dot alias function नहीं use करना है, right? So select and select anyone it depends on the style that you prefer. Otherwise, no big deal. Okay, it works exactly the same. Okay, so absurds हो गया. अभी ये तो बहुत important. See this. Table to enable, if you want to enable the CDC. CDC is what? Change data feed. What does CDC stand for? Conference. Change data, CDF. CDC बोल रहे हो लोग, CDC. Change data capture. CDC. Capture. Okay. Change data capture. Right, so you need to capture the data that has changed. तो आपको ये enable करना है. You can see this. You go to enable this. या फिर once and for all, you can set this property to true. I believe you can do that in your I don't know whether you can do it in your Spark session itself once and for all, but देखेंगे वो. But you can see this. अगर existing table है, तो you can alter the table and you can say delta dot enable change data field is equal to true. एक बार ये enable हो गया, तो then it actually starts, recording the changes. It starts recording the changes. So TW delta, ये रहा delta मेरा people 10, and you can see this change data. ये देख रहे हो आप, एक additional folder बनाता है. It creates an additional folder. And in that folder, it maintains whatever changes are done and how that is. So this is how you enable it. And यहाँ पे फिर मैंने update किया. I just made changes. And after updating it, I have written this program in order to see the change का तो कैसे आएगा. देखो format data option read change data feed true. बस खाली इतना बोलना है. और starting timestamp कभी से change हुआ चाहिए आपको. कल से चाहिए, परसों से चाहिए, कब से चाहिए आपको मिल जाएगा. Right? Order by commit timestamp दोगे तो आपको ऑर्डर में देगा कि कब क्या चेंज हुआ था. फैंटास्टिक चलता है. मैं आपको ये रन करके बताता हूँ यहाँ पे इसी एप्लीकेशन. You're almost done.
ये देखो कैसे अच्छे से बताता है हमें। वो बोलता है कि फर्स्ट नेम थॉमस ओलिवर था, लास्ट नेम ये था शॉ, अपडेट प्राइमेज, अपडेट पोस्ट, सॉरी प्री इमेज, अपडेट पोस्ट इमेज, अपडेट प्री इमेज, अपडेट पोस्ट इमेज। तो ये देखो ये पहले ये था, फिर न्यू नेम ओलिवर शॉ हो गया, फिर न्यू नेम में से वापस से मैंने चेंज किया तो मोहम्मद शाकिर हो गया नाम, और यहाँ पे पूरा कमिट टाइम स्टैम्प। इन शॉर्ट यू गेट द हिस्ट्री ऑफ ऑल द चेंजेस। अभी वेयर आई एम प्लानिंग टू यूज दिस इज दैट सिल्वर टेबल में तो अपना डेटा आ गया, अब वापस से और नए नए ओटीएम से अपने पास नई नई बुकिंग्स आ रहे हैं, ये एग्जिस्टिंग बुकिंग्स चेंज होकर आ रहे हैं, तो आई एम गोइंग टू अपडेट इट इन द सिल्वर टेबल। मुरली, Yeah, sir. Yep. yeah, I'm going to update it, and if I enable this, I will be able to get exactly which particular columns have changed, what has changed, basis which I will do an absurd, I will do something, I will write some code which will do a blazing fast update to Redshift, Yes. Yes. क्योंकि Yep. मुझे सिर्फ वही चाहिए ना, जो चेंज हुआ है वही तो चाहिए मुझे। Correct. Yes. मैं क्यों पूरा वो टेबल पूरा रीड करूं? Correct. Correct. Yes. और अल्टीमेटली ना मेरा एक और गोल है कि अभी तो हम लोग रेडशिफ्ट यूज करेंगे क्योंकि उसका पैसा ऑलरेडी भर चुका है, Right. Right. राइट? उसका पूरे साल का पैसा भर चुके हैं, वी गोना यूज इट, और यूज करना ही है हमारे को, बिकॉज वी कैन नॉट विदाउट, आई मीन वी कैन नॉट टेक द रिस्क ऑफ डूइंग टेकिंग एन आर्किटेक्चरल डिसीजन which we are not really very sure of, तभी रेडशिफ्ट यूज करेंगे। लेकिन आगे चल के हमको करना है क्या, रेडशिफ्ट को भी निकाल देना है, कुछ और कॉस्ट बचेगा। डायरेक्टली हम लोग अपाची लीवी वगैरह कुछ यूज करके वी आर गोइंग टू गेट द डेटा फ्रॉम S3, आई मीन स्पार्क, या फिर S3 से एथीना, या फिर स्पेक्ट्रम यूज करेंगे। Right. करते हैं उसको बाद में करेंगे, बट स्टेप बाय स्टेप। So this is how it is, friends. This completes all. Rest everything is other topics. But then otherwise this completes almost everything. So देखो अभी मैं क्या करूँगा, big data docs, delta। अब ये देखो डेल्टा में मैंने कुछ पॉइंट्स लिख के रखे हैं, right? And you all have access to it, right? You all have access to this, I believe. Yes, मैंने कल ही शेयर किया था। Yes, everyone has got access to this, right? So यहाँ पे ये देखो वर्किंग विद टेबल्स, मैंने स्पेसिफिक पॉइंट्स लिखे हैं। ओवरराइड का क्या मतलब है, अगर अपेंड करोगे तो द टेबल का डेटा जो है वो पूरा ओवरराइड नहीं होगा, नए नए रिकॉर्ड्स ऐड होते जाएगा। अपसर्ट्स के बारे में मैंने बताया, इट्स वेरी इंपॉर्टेंट फीचर। द डेटा कैन बी रेड फ्रॉम द डेटा टेबल इन स्ट्रीमिंग वे, एंड ऑलरेडी स्ट्रीमिंग डेटा कैन बी रिटन टू डेटा टेबल इन अ स्ट्रीमिंग वे। ओके, यहाँ पे क्रिएट के बारे में मैंने कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स लिखे हैं। व्हेन यू क्रिएट अ टेबल, राइट, टेबल्स कैन बी डिफाइंड इन द मेटा स्टोर इन AWS Glue, तो डेटा कैटलॉग पूरा बन सकता है वहां पे, और वो पूरा मेटा स्टोर जो वो वहां पे जो पूरा मेटा डेटा होगा। यू रिमेंबर AWS के कॉल जो हो रहा था, जब उसने भी बताया Yes. था व्हाई डोंट Yes. यू कैटलॉग, या सो Yes. वी कैन रेफर टू दैट डेटा कैटलॉग आल्सो ऑफ AWS Glue। Table can be created by using defined by path, or you can create a table with the metadata of the table। तो अगर मेटा स्टोर के अंदर metadata रखा है आपने, meta store is a place where you keep the metadata। What do you mean by metadata? Metadata is the data about the data। That means तुम्हारा जो डेटा स्टोर कर उसके कॉलम्स क्या है, वो डेटा टाइप क्या है, हर एक कॉलम का, टेबल का स्ट्रक्चर is nothing but the metadata, Yes. right? So these are the two ways of doing it। Data frame writer API can be used to create the table। Delta table builder can be used to create the table। Tables can be created with the partitions। Partition का मैंने आपको explain किया। Data location, when the table is defined in metastore, it is possible to specify the table path। तो वहां पे भी हम बोल सकते हैं कि S3 में यहाँ बनना चाहिए tables। Generated columns, we can very well are like computed columns, helps। there is a concept of generated columns in delta table। वो क्या करता है ना, वो स्पेस नहीं लेता, वो नहीं, शायद एक मिनट, आर लाइक कंप्यूटेड कॉलम्स हेल्प्स इन क्वेरी परफॉर्मेंस इफ जनरेटेड कॉलम्स आर यूज्ड फॉर पार्टीशनिंग। इट एक्चुअली डज टेक स्पेस इन स्टोरेज, can be used to create partitions। A timestamp field can be used to generate columns for partition as follows। अरे ये जरूर देखना मुरली, Yep. ये जरूर देखो यार, वो क्या ब्यूटीफुल फीचर है बताइए। ये देखो, ये देखो, it supports your generated column, it supports windowing function like this। आप ऐसे स्पेसिफाई कर सकते हो सबस्ट्रिंग डेट फॉर्मेट वगैरह as date। ये देखो, 2 partition columns defined by year, call, month as timestamp। 3 partition columns year, month, date। अपने को चाहिए ना day wise, month। Yes. 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 ये जरूर देखना, ये आप अच्छे से देखना, जरूर देखना प्लीज।
Okay, read this pretty carefully to understand how partition filters works when query is performance or when query is performed on the basis of column, on the basis of these columns, right? अभी यहाँ पे देखो ऐसे read using spark.table default means the table from meta stores blah 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 travel and time, so you can specify that select star from table timestamp as of time expression. अब ये जो expression है ना, this is very powerful यार, timestamp sorry expression, this is very powerful. You can very well specify कि expression कैसे रहे, that is string that can be cast to timestamp, तो कोई भी आप string दे सकते हो, आप ऐसे स्ट्रिंग देके एज टाइमस्टैम्प दे सकते हो, आप कोई डेट दे सकते हो, करंट टाइम माइनस इंटरवल 12 आवर्स देख सकते हो ऐसे, एंड देन यू कैन से डेट सबट्रैक्ट. ऑल ऑफ दीज एक्सप्रेशंस कैन बी गिवन इन ऑर्डर टू ट्रैवल इन टाइम. बहुत बढ़िया चीज है. Okay, wonderful things can be done like query the number of customers added in last week. This is what we can do. अगर ऐसा कुछ चाहिए तो डेटा रिटेंशन फॉर ट्रैवल टाइम वो 30 दिन तक के, ये जो सीडीसी है ना, जो चेंज डेटा है वो सिर्फ 30 दिन तक के रखता है डेटा. हाँ, replace where also you can use, tables can be updated conditionally with replace where. I have demonstrated that to you. Idempotent rights. Idempotent, what is idempotent? When you multiply one thing with itself, it will still remain the same. So let's go to dictionary. Idempotent, you can see that denoting an element of a set which is unchanged in value when multiplied or otherwise operated by itself. So 2 multiplied by 2 will become 4. 2 multiplied by 2 doesn't remain 2, right? But 1 multiplied by 1 remains what? 1. That is idempotent. Correct. So you see this. So when the data doesn't change, so this is pretty important to avoid duplicates in data tables in case of retries and job retries. तो ये भी एक बार अच्छे से देख लेना, ये समझ लो, ये सब फीचर्स है, मैंने सब अच्छे जो इंपॉर्टेंट पॉइंट्स ऑफ गैदर किए. Additional user defined commit data, user metadata override for fixing incorrect data. There are ways to, अगर suppose आपका डेटा करप्ट हो गया है फॉर सम रीजन, कुछ गलत लॉजिक था, कुछ था, अगर आपको वापस उसको रिपेयर करना है, there are ways to do it. Updating the schema possible via DDL and all, तो आप schema को भी change कर सकते हो. Table history, it remains for 30 days. I have just shown you the table history. Merge is pretty powerful. You can do merge with an update and an insert expression. That is an absurd. I have already explained. Okay, can merge all the columns when rows वगैरह वगैरह वो सब मैंने अभी explain. अच्छा, ये देखो, all the major components are all in all, the when matched है, when not matched है, when not matched by source. The difference is that you do not have reference to the source column. मतलब आपके source column में वो data है ही नहीं, delete कर सकते हो. एक तो ये कि मैच किया, दूसरा ये कि मैच नहीं किया तो इंसर्ट है, करेक्ट. एंड व्हेन नॉट मैच सोर्स डॉट डिलीट कर सकते हो आप, अगर आपको वो करना है तो. मैंने यहाँ पे भी लिंक्स दिया, आप उसको अच्छे से देख सकते हो, राइट. होता है ना कभी कभी अपडेट इंसर्ट और डिलीट भी करना है, आप वो भी कर सकते हो. यू कैन वेरी वेल डू दैट. लेट मी चेक दूसरा एग्जांपल है तो अपने पास. हाँ है ना. सी व्हेन नॉट मैच्ड, नहीं व्हेन नॉट मैच्ड, व्हेन नॉट मैच्ड इन सोर्स, व्हेन नॉट मैच्ड बाय सोर्स. ये जरूर याद रखना. हाँ, अतिक, मुरली, तुफैल, Yes. जरूर याद रखना. सो दैट यू नो कि अगर आपको पता है कि दिस इज हाउ द थिंग्स आर, देन इट बिकम्स. ये रहा ये देखो है. हाँ, मैंने कमेंट इसलिए किया बिकॉज आई वांटेड टू डू समथिंग एल्स, बट अदरवाइज ये चला के देखा है तो ही मैंने कमेंट किया, राइट. सो सी दिस merge upset से देखो यहाँ पे when not matched by source target session current date interval day 5 update expression ये भी है, and when not matched by source then delete देखो ये भी है. ये सब मैंने execute करके देखा. it works like a charm. मतलब ये कि जो रोज ऑलरेडी एग्जिस्टिंग है उसको अपडेट करो, नए रोज आए हैं सोर्स में तो उसको इंसर्ट करो, लेकिन डेस्टिनेशन के अंदर कुछ रोज ऐसे जो यहाँ पर नहीं है, सोर्स में नहीं है, उसको डिलीट कर दो. फैंटास्टिक इजंट इट. तो क्या क्या फीचर है. मर्ज स्कीमा वैलिडेशन वगैरह है विद व्हाट इफ द स्कीमा ऑफ द सोर्स इज डिफरेंट देन द टारगेट, तो उसके लिए भी फीचर है. मैं भूल गया क्या है, लेकिन देख लेना आप लोग. मर्ज इज pretty powerful. check the example section under the same topic in docs. आपको यहाँ पे
बहुत पावरफुल है, ये आपको सब मिलेगा। ये देखो यहाँ पे मिलेगा मर्जेस, यहाँ पे आपको मिलेगा अपसर्ट इनटू द टेबल यूजिंग मर्ज, यहाँ से स्टार्ट हो जाता है। बहुत पावरफुल है, बहुत कुछ कर सकते हो आप। देखो कितने अच्छे अच्छे एग्जाम्पल्स दिए लोगों। आप अगर ये नहीं अच्छे से पढ़ोगे, नहीं सीखोगे, एंड देन यू स्टार्ट डूइंग थिंग्स, यू विल एनीवेज एंड अप राइटिंग कोड, बट इट विल नॉट बी क्वालिटी कोड, राइट? चेंज डेटा फीड के बारे में मैंने आपको बताया था। अपडेट, ट्रांसमिट चेंजेस टू Kafka. You can also transmit changes to Kafka also. जो चेंज आया आप Kafka में डाल सकते हो ना. At the other end, you can have a listener which can do something, isn't it? Yep. You can even do that. Well, so this is all what that I wanted to share with you all today. And what I'm going to do here is that how do I make this available? I want to make this available to you all. जितने भी अपने team members हैं जिनको Transform Workspace का rights है, ये public नहीं है. I cannot make this public at all. ये अपना personal stuff है. But then how can I? Why thing is that because wherever it is access key, I want to remove this. Right? तो आप लोग कोड देख लो, and you all do not work on S3, you all work on the local file system that I have already demonstrated to you. Okay, access key. यहाँ पे भी I will remove this, and I will remove this. And what is the yes, so I'll just commit this, but main branch में अभी भी रहेगा removed keys. अब ये रिकॉर्डिंग भी हो रहा है, कोई भी वहां पे एग्जैक्टली रिकॉर्डिंग को स्टॉप करके देख लेगा, की टाइप करेगा. So please don't share this recording with anyone. I'm going to share it with you guys, but then I will need your Gmail ID. आप Gmail ID देना तो मैं आपको access दे दूंगा ये recording. ठीक है? And you will not have access to give this recording to someone else. So please don't. Okay, ये हो गया. And then let me go to my main branch also. I'll say checkout. या फिर अगर मुझे इसको main में merge करना है तो कैसे करेंगे? इसको checkout करूंगा मैं, and then इसको rebase with main. No, I will check this out, and this will be अरे मैं भूल गया, बताओ रे बाबा. रीबेस के नीचे वाला ऑप्शन है ना, मर्ज. कहाँ पे? मेन में. मोर ट्रांसफॉर्म जो आपके ब्रांच है उसको चेकआउट करना है. हाँ नहीं, तो मेन को चेकआउट करना पड़ेगा ना मुझे, और इसको सिलेक्ट करके मर्ज इनटू मेन. बराबर? यस, हो गया. पुश करना रहेगा सिर्फ. हाँ, कुछ करना है. अभी मैं किस में हूँ? मेन में हूँ ना. यस, देखो यहाँ पे नया यूआई में इधर है, सो मैं देखूंगा अभी यहाँ पे कीज बराबर अपडेट हुआ है कि नहीं. बराबर है. So I am now going to update this. So now I will also not use those values. I will not hardcode this here. I will always use it as a command line argument, right? So that it doesn't give me that problem. क्या हो गया इसको? क्यों नहीं गया? अच्छा, अपडेट किया मैंने, पुश नहीं किया शायद. यू कैन राइट क्लिक एंड पुश. हाँ किया, कर दिया, पुश कर दिया. Okay. इसको भी चेकआउट करके I hope I have pushed this code. Yep, it's pushed. Right, perfect. So you can take the pull, जिसको भी transform, and the name of this is bronze transformer. You can take this. Actually, this is going to be the real project. इसको मैं enhance करते करते, and I'm going to keep all my ये अपना R&D वाला भी यहाँ पे folders रखेंगे. There is no harm in that, ना? Yep. No harm in that. रखेंगे हम लोग उसको, भैया रेफरेंस रहेगा अपने को सबको. एंड इसका नाम मैं फाइनली बाद में, अभी तो आप चीजें यूज कर लो, मैं उसका नाम चेंज करूंगा. ब्रॉन्ज नहीं, these are the transformers. These are TW transformers. इसके अंदर दूसरे ट्रांसफॉर्मर्स भी इसी के अंदर लिखेंगे आप. राइट. तो जार फाइल बनेगा. जार फाइल के अंदर जो भी क्लास का हमको जॉब सबमिट करना है, हमको हाइफन हाइफन करके क्लास करके देना होता है. राइट मुरली? Yes, correct, sir. Yes. ठीक.
ठीक है, perfect, cool, good. So this is what it is, and this is what we had to share. And I hope this was fruitful 2 days. And because this is the bulk of the work, and this will be the major effort oriented work that we will be doing. All right, writing the transformers. अभी एक last point है, अभी भी अपने पास 10 मिनट है, सुनो. My idea here is that our teams must be expert, so very expert, that they do end-to-end data pipeline. So for example, what we need to bring into the system is bookings. Agreed? Bookings लाना है. Yes. Yes. And we need to bring vessel schedules, Yes. Yes. right? Then we need to bring, क्योंकि अपने को वन लॉजिस्टिक प्लेटफॉर्म के अंदर आपको पता है ना हमको क्या करना है. We want to build NVOCC वगैरह वगैरह सबको यहाँ पर लाना है अभी अपने को. Vessel schedules और क्या क्या है? Invoices. हाँ, sorry. Invoice. हाँ, इनवॉइसेस. तो उसका इनवॉइसेस भी लाना है. और फिर कुछ एक और एग्जांपल और दे दो. SOA. Yes. So we're tracking. अरे सबसे इंपॉर्टेंट. सो बुकिंग एंड ट्रैकिंग तो सबसे वो तो की है, राइट? ट्रैकिंग अपने को लाना है, राइट? अभी ये तो स्टिल दिस इज जस्ट अ ड्रॉप इन एन ओशन, बिकॉज why? Because this is what we are supposed to bring with respect to whatever is already discussed with respect to GVP. अभी जो अपना बिजनेस इंटेलिजेंस का जो तुफैल जिस पर काम कर, उसका काफी सारा डेटा बुकिंग से आ जाएगा, लेकिन Oracle फ्यूजन से भी काफी सारा डेटा लाना है. Am I right? Yes. Correct. तो वो सब का डेटा लाना है. तो that means there will be one data pipeline created. So this will have its own data pipeline. That means you will have a specific API for bookings. That API will have a specific Lambda expression for, Lambda function to consume the data that has come through that API. And then a specific transformer will be used for bookings. Hence, I have named this transformer as bookings transform. As you can see this from here, it's a bookings transform. You can see this bronze transformer, bookings transformer, bronze के लिए, and silver के लिए. You see this? Your screen is not shared, Shakir. Oh, sorry. अरे मेरी स्क्रीन जब से मैं बात कर रहा हूँ शेयर नहीं. So this is what I was talking about. See this bookings का, tracking का, vessel schedules, invoices and this. So bookings का अपना data pipeline होगा, tracking का अपना खुद का data pipeline होगा, Yes. right? Pipeline होगा इसका. Then vessel schedules का अपना खुद का data pipeline होगा, right? So what is the objective and why did we do this training for everyone? We become a big data company, right? अभी वो मोबाइल ऐप्स सब पप्पू लगता है, मेरे को छोटा चीज लगता है. हाँ, आप लोग को क्या लग रहा है? उस माइक्रो सर्विस वगैरह क्या लिखने का, वो क्या रेस्टफुल एपीआईज वगैरह सब पप्पू है वो अपने. अभी नाउ वी आर व्हाट स्पेशलिस्ट? Big data specialist. Big data specialist, right? And then the next step is AI and ML specialists, Yes. right? That's the target. So every one of us, we must be skilled enough. कि अजहर को दे दिया. Azhar, you're there? Shahrukh, you're there? Always? Yes, sir. Tawfiq, Yes, sir. Yes. Yes. आपको दे दिया ये डेटा पाइपलाइन. तो एपीआई बनाने से लेके, क्लाइंट एप्लीकेशन से लेके, एपीआई बनाने से लेके, लैम्डा फंक्शन लिखने से लेके, ट्रांसफॉर्मर लिखने का, सिल्वर का ट्रांसफॉर्मर लिखने का, रेडशिफ्ट में डेटा डाले, पूरा एक इसको बोलते हैं डेटा पाइपलाइन. क्या बोलते हैं इसको? डेटा पाइपलाइन. This is the technical that is used. Yes, data pipeline. You can see this. This is a technical term that is just data pipeline. Okay, see. What is a data pipeline? Data pipeline is a method in which raw data is ingested from various sources and then ported to data store like a data lake or a database for analysis. Before data it usually undergoes some data processing, which is nothing but transformation. Correct? So सबको ये पूरा end to end आना चाहिए, so that the work is divided. How the work is divided? Not as follows. Not as follows. भैया तुम ट्रांसफॉर्मर लिखो, मैं लैम्डा फंक्शन लिखता हूँ, आप रेडशिफ्ट में डालने का काम करो. नहीं, ऐसे करेंगे तो काम आगे नहीं चलेगा और फास्ट नहीं होगा. मतलब पूरी टीम must be full stack in big data. What do you mean by full stack in big data? You must know how to write
how to write code in Scala, Python, or Java in order to read from OTM, SAP, whatever. Put it to API gateway, create your own API. From the API, it goes to Lambda, write your own Lambda function. वहां से आपने डालना है bronze में, write your own code to in Lambda function to put it in bronze. Write your own transformer to take it from there, and then functionality एक बार समझ में आ गया क्या डेटा आएगा और क्या डेटा फाइनल चाहिए, आपको खुद को लिखना है. ये पूरा end to end डेटा पाइपलाइन लिखना है. Are we clear on this? Yes. Correct? And we can do it. We can very well do it. Isn't it? Yep. Yes. Excellent, excellent, brilliant, brilliant, very nice. ठीक है, चलो. So this is what if you all have any questions, any doubts, absolutely feel free to ask. Any doubts, any questions? Yeah. भाई यहाँ पे कोई ऐसी चीज है जिसका हमें ध्यान रखना है, जिससे टेबल डिलीट हो सकता है या फिर कोई डेटा लॉस हो सकता है, उस चीज का ध्यान रखना है हमें प्रोग्रामिंग के टाइम. Yes. तो आपको डिलीट तो करना ही नहीं है. अगर आप ऐसा कोड लिख दिया तो डिलीट हो सकता है. So you've got to be careful about it. You shouldn't be writing any such code which will end up, actually deleting the table. Yes, you've got to be very careful about it. Shouldn't be doing that. अब वो देखो कौन डिलीट करेगा. अभी वैसे तो मैं एक ट्रंकेट कमांड अभी प्रोडक्शन में जाके दे सकता हूँ ना टेबल में, राइट? सो द वन हु हैज एक्सेस, so secret keys must be protected. Public must be working on their local systems only with the local with local file system. Yes. Then only and only when it is reviewed, the code is reviewed, then it goes on to EMR. And EMR पे वहां पे जब हम चलाएंगे तो वहां पे access key वगैरह must all be parameterized. It must not be the part of the code the way we have written in training. Okay. Correct? And AWS console का तो access मेरे ख्याल से सिर्फ अभी 2-3 लोगों को है और किसी को है भी नहीं. Yes. Right? So you've got to be very careful. Yes, if at all the secret keys or the usernames and passwords are compromised, जो कि database में अपना username and password is अभी जो username and password है ना वो सब में फिर रहा है वो, हाँ अच्छा नहीं है वो. अपने 2-3 लोगों के पास ही है ना. अच्छा पासवर्ड अभी, लेकिन पासवर्ड हम लोग चेंज करेंगे तो डाउन टाइम आएगा, है ना? Yes. हाँ, तो एक बार डाउन टाइम आने दो, लेकिन पासवर्ड चेंज कर दो प्लीज. और किसी के साथ तो कभी करेंगे हम लोग ये, आज रात को कर सकते हैं, पासवर्ड चेंज कर सकते हैं. डेटाबेस का सिर्फ रेडशिफ्ट का डेटाबेस का पासवर्ड चेंज कर दो. Yes. हाँ, और वो पासवर्ड फिर वापस से अपना प्रॉपर्टीज में डाल के, इनफैक्ट प्रॉपर्टीज में भी से निकाल के, हाँ, और property निकाल के अपना वो, वहाँ- हाँ वो अपने जो सर्विस का फाइल होता है ना शाकिर, जहाँ हमने पहले भी किया था, वहाँ पे मेंटेन करते हैं एज अ रन टाइम पैरामीटर. करेक्ट, एज अ रन टाइम पैरामीटर. और सिर्फ पासवर्ड आप यूजर नेम फिर भी रख दो आपके एप्लीकेशन और प्रॉपर्टीज फाइल में तो चलेगा, Yep. पासवर्ड नहीं. Right? Can I expect this to be done today by tonight itself? Yeah, sure. Yeah. हाँ प्लीज, आप सब में से कोई भी एक आते कि आप दोनों में से कोई एक ये रिस्पॉन्सिबिलिटी ले. Sure. Any other question अपना आतिक? No, but like quite good about this. Sorry. भाई जस्ट वन क्वेश्चन, हम लोग बैच में करने वाले हैं, करेक्ट? ओके. हाँ, स्ट्रीमिंग नहीं, बैच में. और ये वर्जन्स मेंटेन करता है. सो अजम्पशन ये रहेगा कि जो लास्ट टेबल रहेगा हमारा, ओके, वो हमेशा लेटेस्ट रहेगा, करेक्ट? और ये वर्जन इंटरनली मेंटेन कर रहा है. Yes. आपको बोलना नहीं पड़ेगा कि मेरे को लेटेस्ट वर्जन का डेटा है. ओके. लेकिन अगर आपको पुराना वर्जन चाहिए तो आपको बोलना है कि मेरे को पुराना वर्जन का तो आपको दे देंगे. बैच की लिमिट्स रखनी पड़ेगी. जैसे हम लोग ऐसा कुछ कर सकते हैं भाई कि जैसे ओटीएन का हम डेटा फैच कर रहे हैं, लाइक हमने डे वाइज लिया कि लास्ट 3 दिन में जो अपडेट्स डेटा हुआ है वो आया हमारे पास. लेट्स से 1000 बुकिंग्स आई है, तो क्या हम वो उसकी एक बैच प्रोसेस करके, क्योंकि ये सारा एक साथ ही प्रोसेस होगा, करेक्ट? और माइंडसेट भी यही रखना है कि सिंगल रिकॉर्ड्स नहीं है, ये एक साथ प्रोसेस हो रहा है सारी बुकिंग्स. करेक्ट. कैन वी डू लाइक दैट? और हम लोग उसको बैच में कन्वर्ट करेंगे फैच करने के बाद. नहीं, ये सब पूरा माइंडसेट चाहिए, सब बैच ही है. यस. You do not, अभी देखो एक मिनट ये देखो, you do not have one object at all. जहां पे भी आपने डेटा फ्रेम देखा है, that data frame contains all the data. यस भाई, बैच में ही करना है, दैट्स द क्लियर. बट जैसे 1000 रिकॉर्ड्स है मेरे पास अभी इन हैंड,
क्या हम उसको भी 100 के मैच करके फिर हम नहीं 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 नहीं, all 1000 will be one. ऑल वो 1000? एक बार आया है वो सब, यस यस यस, उसको उसको फर्दर नहीं। यहाँ पे वेरी गुड क्वेश्चन, यहाँ पे बैच का मतलब ये है कि स्ट्रीमिंग नहीं हो रहा है। ओके जो डेटा एक साथ आया है, चाहे 1000 आए चाहे 10,000 आए, ओके फाइन। है ना? ये क्वेश्चन मैंने इसलिए पूछा कि क्या सिस्टम पे लोड आता है क्योंकि एक हद से ज्यादा डेटा प्रोसेस कर रहे हैं हमें। हाँ, तो अगर लोड आता है तो इसीलिए तो EMR है, जहाँ पे ऑटोमेटिकली स्केलिंग होगा। ओके इसीलिए तो स्पार्क है कि वो क्लस्टर में चलता है। यस 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 फाइन। फरहान ने तवंत में ऐसे वर्कलोड्स चलाया है जिसमें इतनी सारी मशीन्स होती थी, इतने सारे नोड्स होते थे, और हर नोड पे इतने सारे प्रोसेसर्स होते थे, मतलब कोर्स होते थे, कि वो 700 कोर्स पे उसने प्रोजेक्ट्स अपना जॉब्स चलाया है। 700 कोर्स। 700 कोर्स, हाँ, नोड्स नहीं, 700 कोर्स। ऐसे ऐसे चलो, गॉट इट ना? यस मैम गॉट इट। बहुत अच्छा, सोचो सोचो और क्या क्या क्वेश्चन है तो करो, और फिर बाद में, अभी इसके बाद, अब मैंने जितना बताया ना, उसके आगे अपने को एक्सपर्टीज गेन करना है, और Yes. एक्सपर्टीज गेन जितनी ज्यादा होती जाएगी उतना वी विल बी एबल टू सर्व आवर कस्टमर्स इन अ बेटर वे। यस यस नॉलेज इज किंग मैन, नॉलेज इज किंग, है ना? एंड इट गिव्स अस अ किक यार। यार आप देखो डेल्टा वेल्टा डेल्टा टेबल पे काम डेल्टा लेक्स ना बोलने को कितना अच्छा लगता है। ऐसा है, दिस इज व्हाट वी लव टू डू। Yes. ठीक है, आई थिंक वी आर गुड विद दिस। और कुछ है तो नहीं? नहीं बोलो, अगर कुछ क्वेश्चन है तो बोलो फ्री। सो मुरली, हम लोगों ने इतना R&D किया, इतनी मेहनत किया है हमने आर्किटेक्चर पे, इतनी मेहनत किया है, और वो सब मेहनत नाउ आई कैन सी रंग ला रही है Absolutely. यार, Yes. क्रिस्टल क्लियर। मतलब अभी तो किसको भी हम लोग ऐसा बात करेंगे ना कि 10 साल से हम लोग बिग डेटा का आर्किटेक्चर Yes. राइट। और मैं आपको बताऊं, बड़ी बड़ी कंपनियों में, व्हेन पीपल वर्क, अगर ट्रेनिंग ऑर्गेनाइज हो जाती है तो हो जाती है, बट देन अदरवाइज लोगों को बोल देते बस काम करो। अब वो जो बंदा काम कर रहा है ना, उसको उसका एक बेचारे का एक माइंडसेट है, वो माइंडसेट है, उसको बता दिया स्पार्क। अब वो गूगल करते करते, इधर उधर से कॉपी पेस्ट करते करते, कुछ ना कुछ करके कोड चला देता है। Yes. So the quality of the application, quality of the software is not good. Yes. That's not the approach that we take. We take the approach of educating ourselves and learning in such a way that we are super confident on the quality of the code that we write. Yes. Yes. उसमें मजा है। Agree. ऐसे तो हमने हमेशा वैसे ही किया है, इस बार भी हम लोग वैसे ही कर रहे हैं, राइट? और ये इट्स वन टाइम एफर्ट। अभी ये सीख लिया, ये समझ लिया, इसको मास्टर कर लिया, अभी आगे चल के कोई प्रॉब्लम ही नहीं है, वी कैन। और ये दिस इज ड्रॉप इन एन ओशन अभी भी जो हमारे पास। Correct. 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 Yes. अरे कितनी 50 प्रोडक्ट्स है, टूल्स है, क्या क्या है, अपाची फ्लिंक है, ये है वो है, अपाची लीवी है, क्या क्या नहीं है यार। हम लोग वो सब भी एक्सप्लोर करेंगे और मस्त से मस्त बनाएंगे ना। Yes. Yes. सी प्रभाकर इज इनटू सेलिंग ऑफ प्रोडक्ट्स, Yes. वी आर इनटू सेलिंग ऑफ स्किल्स। Skills. Correct. Correct. सो हमको हमारे स्किल्स, जैसा वो प्रोडक्ट डेवलप करता है वैसा हम लोग स्किल्स डेवलप करना है ना। Correct. Correct. Yes. हम लोग कंपटीशन में नहीं है। Yes. Yes. Agree. Whatever we are building, it is his money, it is his product, right? Yep. Yep. The intellectual property that we gain, Yes. जो अपना लर्निंग हो रहा है, वो इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी है, वो मेरे से कोई नहीं ले सकता, वो मेरा Correct. पर्सन, Correct. राइट? तो वो यूज करके वी कैन सेल आवर स्किल्स, वी डोंट सेल प्रोडक्ट्स, वी सेल आवर स्किल्स। Correct. Yes. Yes. गुड, वेरी नाइस, ठीक है, ऑल गुड, यस। So I think we had a very fantastic session these 2 days, and all the best to you all. And now we will start giving tasks also. To fail, you are the first person to jump onto this for your business intelligence. यस भाई। आपको वो फाइल आ गई, फाइल किधर है? वो चारू के साथ कनेक्ट करो, वो फाइल देना है। कौन सी फाइल? 150 कॉलम्स वाली फाइल। Yes, and yes. she's supposed to work on it, and she's supposed to map the data of that file and the columns of that file, the data points in that file with the data sets that we have created. Yes. And we are supposed to start finding what are the APIs that we will invoke on OTM, what are the APIs that needs to be invoked on Oracle Fusion, so that we get those data points.
Yes. और फिर अपना डेटा पाइपलाइन को एनालाइज करना है, डिजाइन करना है कि ये डेटा पाइपलाइन चाहिए, ये फंक्शनलिटी होना चाहिए, और लिखना स्टार्ट करना है। Okay. ठीक है ना? Yes. बहुत सारा काम है, बहुत इंटरेस्टिंग। ठीक है। Shakir, one point from my side, right? So all the members who are there in this call, no. So initially, when I went into this Hoodie data lake and that, right? So and we also have Redshift. Does anyone have a doubt saying that we already have Redshift, right? Which is a data warehouse, and we have data lake. Both are serving the same purpose. Why we can't send all these individual records to Redshift and do all these calculations in Redshift itself? Why we need a data lake? Does anybody has this doubt? No. No. नहीं, Can you- सरप्राइजिंग है, क्यों नो? So हाँ. Murli, you can put your point across. Yes. Why you don't have this doubt? So Murli, basically हम लोग ने जब Redshift में स्टार्ट किया था, so we were inserting the records and उसमें जब हम लोग का जो multiple records insert हो रहा था, Okay. like the thousands of records were getting inserted from the OTM, so it was taking a load of time. The time you, me, Akib and Uwais, we have conducted that test की जो 8-8 घंटे 9-9 घंटे चलता था। करेक्ट। उसके बाद आपने उसको एनहांस कर दिया, राइट? उसको एनहांस किया, Yes. जो भी सिंगल रिकॉर्ड हो रहा था बैच में कर दिया। अब नाउ एवरीथिंग इज रनिंग फाइन, राइट? Yes. And still, if it is running fine, why we have to go to data lake? Because of the multi-tenancy and the millions of records we will get. No, Redshift is built to serve millions of records. Okay. Right? Redshift is a data warehouse. Look, if you see, current trend is like that. Redshift is a package of compute and storage, right? Yes. Means that you store your data on a machine and you do your computation, you do your evaluation, you do your select, and everything is packaged together. It is not separatable, right? Yes. Where in Delta Lake, if you see, you have this bifurcation of compute and the storage, right? Why, if you see, if you have a very huge compute, right, and you want to store less data, so Redshift is not ideal. And in the reverse way, if you have very huge data and very less computation, even though Redshift is not helping that, it is not the optimized thing, right? So the current industry is moving towards a solution wherein compute is separated from storage. Super. Right. So Yeah. that is why now we have this Delta Lake, Iceberg, and Hoodie like things coming into picture, and this is the concept of lake house, right? Okay. Yeah, just wanted to put this point. Super point, brilliant point, brilliant point. तो जब आप सिलेक्ट बोलते हो, सिलेक्ट काउंट ऑफ, या आप बोलते हो कि सिलेक्ट सम ऑफ सम फील्ड, तो आप लिखोगे कि लाइक select customer ID, count of star from bookings, Yes. group by customer ID. अब वो बता देगा कि हर एक कस्टमर की इतनी बुकिंग, दूसरे कस्टमर की इतनी बुकिंग, तो वो कैसे करेगा? तो स्टोरेज, आपका डेटा स्टोर्ड है रेडशिफ्ट पे, और ये जो कंप्यूटेशन है ना, ग्रुप बाय सम, वो भी रेडशिफ्ट में ही हो रहा है। Yes. तो ये दोनों को सेपरेट करना है। स्टोरेज विल हैपन इन रेडशिफ्ट, बट ये जो कंप्यूटेशन है पहले ही होके आएगा कहां पे? Data lake से. डेटा लेक से कंप्यूट होके डेटा ऐसे आ जाएगा कि जस्ट खाली रिप्लाई करना है। तो heavy computations will not happen in Redshift. Complex computations are going to happen where? In Spark. Okay. कितने आदमियों को खाना लाया? कितने आदमियों को? Cool, good. Anything else? No, Shaker, I'm done. This is good. Yep. Super, fantastic. Thank you so much, friends. Thank you so much. Get back to work, to your individual tasks. We're going to connect again, Murli. हम लोग फिर से बाद में connect करते हैं, and I will start connecting with individual teams and stuff. And then हमारा tasks जो चल रहा है हाथ में, उसको review करके we'll take things ahead. Sure. ठीक है? Okay, चलो. Take care, guys. Thank you so much for attending. Thank you so much. Thank you so much for your participation.